Hey Bill, how are you? I'm good, Ollie. What about you? Honestly, I'm a little stressed. We have so much to study for the English test. Yeah, true, but don't worry. We still have 2 days left. Have you started preparing? I've read the grammar notes, but I'm still confused about tenses. Tenses are tricky, but I can explain them. Do you want to study together after class? That would be great. Thanks, man. No problem. Let's meet at the library at 4 p.m. Should I bring the textbook? Yes, and also your notebook. Well, practice writing some sentences. Okay, I really appreciate your help. Perfect. Anytime. We're classmates, we have to help each other. जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी सी वोकैबुलरी देखते हैं। जैसे ऑनेस्टली मीन्स सच कहूँ, लिटिल डिस्ट्रेस्ड मतलब थोड़ा सा दबाव में हूँ, स्टडी फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए तैयारी करना, हैव यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्या तुमने तैयारी शुरू कर दी है, ग्रामर नोट्स मीन्स ग्रामर नोट्स, कन्फ्यूज्ड अबाउट टेंसेस, इन टेंसेस के बारे में उलझन में हूँ, स्टडी टुगेदर इकट्ठे पढ़ाई करना, लाइब्रेरी कुतब खाना, अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद की कदर करता हूँ, क्लासमेट्स हम जमात। जी अब ये सारा इसका आप तर्जमा पढ़ लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये तर्जमा पढ़ने के बाद एक मतलब फिर ये डायलॉग सुने तो आपको मज़ीद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप इस तरह से ये अपने प्रैक्टिस जारी रखी तो बहुत जल्द आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। थैंक यू।